all air system. In the all air system, we use AHU. So basically, as we discussed previously, okay, as we have discussed previously, all air system in AHU, okay, AHU. Uh, so basically, all air system, all water system, that means indirect refrigeration system. We used for the applications like bigger applications like airports, malls, movie theaters. All these applications we use AHUs. So suppose I am taking an application which requires 600 CFM of air. 600 CFM of air. So as it requires 600 CFM of air, so what we'll do is we'll take one AHU here. So now we are taking an AHU here. This AHU will be placed outside the condition space. Okay, this AHU will be placed outside the condition space. Why? Because AHUs are very big. Suppose if you come to the diesel generators, for a big commercial building, what will be the size of diesel generator? It is very huge, right? So as it is very big, where we'll place the diesel generator? The diesel generator, we are going to place it. Okay, the diesel generator, we are going to place it in the application, in the cellars or rooftop. Okay, in the cellar or rooftop. Here also, this thing, the AHU also as big as the diesel generator. और diesel generator कितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा AHU होता है, इसलिए हमें इसको भी रूफटॉप नहीं तो सेल्लार पे रखता है. आजकल आर्किटेक्ट्स क्या कर रहे हैं, AHUs के लिए सेपरेट रूम्स दे रहे हैं हमको. दे आर गिविंग ए सेपरेट रूम्स to provide the AHUs, to place the AHUs, which is called as AHU rooms. So in the AHU, it consists of a filter. AHU में एक फिल्टर होता है. एक फिल्टर, एक कूलिंग कॉइल, और एक ब्लोअर होता है. एक फिल्टर, कूलिंग कॉइल और ब्लोअर. फिल्टर, cooling coil, blower. Filter, cooling coil or blower. So these are the three components which are present in the AHU.
Okay, which are present in the AHU filter, cooling coil, and blower. Now, in this, now in this, we need 600 CFM of air. As we required 600 CFM inside the room, we need to take 600 CFM of air. To take 600 CFM of air, we have a VCD, volume control damper. Volume control damper. So we have a volume control damper. That volume control damper allows only 600 CFM per minute of air. 600 CFM of air. So bahar ka air hai na, this is outside air. So assume it is having 40 degrees centigrade and 80% RH. Now this air will enter into the AHU. So total component is called as air handling unit. Okay. So this air, the hot air will enter. Okay, the hot air will enter into the AHU. Inside the AHU, what is happening? Inside the AHU, what is happening? It enters into the AHU near the filter. Okay, near the filter, the air gets filtered. Okay, near the filter, the air gets filtered. Okay, so whatever the impurities present in the air, this air gets filtered, and then this air will move towards the cooling coil. कहाँ मूव हो रहा है? वो कूलिंग कॉइल के पास मूव हो रहा है. इन द कूलिंग कॉइल, ओके, इन द कूलिंग कॉइल, so we are going to supply in the cooling coil, we are going to supply 5 degrees centigrade of chilled water solution. 5 degrees centigrade of chilled water solution. We are going to supply 5 degrees centigrade of chilled water solution. So now the coil temperature, okay, now the coil temperature will be 5 degrees centigrade. Now this the air which is filtered will be supplied to the cooling coil. Okay, the air which is filtered will be supplied to the cooling coil. कूलिंग कॉइल के पास हीट एक्सचेंज होता है. क्या होता है सर? कूलिंग कॉइल के पास हीट एक्सचेंज होता है. सो एज हीट एक्सचेंजेस class in okay. सो नाउ क्या होता है सर? इधर हीट एक्सचेंज होता है. हीट एक्सचेंज होने से द हॉट एयर विल गेट कंफर्ट. ओके, द हॉट एयर विल गेट कंफर्ट एयर एंड दिस एयर, द कंफर्ट एयर हियर कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन होता है. क्या होता है? कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन. ओके, सो द एयर विल बिकम कंफर्ट एयर. सो दिस एयर नीड टू सप्लाई टू द रूम. ये रूम के अंदर हमें सप्लाई करना है तो उसको कुछ प्रेशर देना पड़ेगा. ठीक है, उसको कुछ प्रेशर देना पड़ेगा. वो प्रेशर को, ओके, वो प्रेशर को हमें ब्लोअर का हिसाब से देता है. ओके, दैट प्रेशर हैज बीन टेकन बाय यूजिंग ए ब्लोअर. नाउ फ्रॉम हियर इट इज, सपोज इट इज आउटसाइड द कंडीशन स्पेस. इधर से हमें एयर को इधर तक लेके आना है. क्या चाहिए हमको बीच में? पाइप सर.
I think volume control damper. क्या चाहिए? Volume control damper. वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर चाहिए Or sir, I can do it like BRB and BRF. डक्ट चाहिए सर, डक्ट। हेलो, क्या चाहिए? डक्ट चाहिए ना? Yes, sir. यस, डक्ट चाहिए। सर allow me 1 minute. Just give me, someone is facing issue with the registration. I'll. एक जगह पे बताया कि UORPS कॉन्सेप्ट जरूरी था, ठीक क्या टाइटल दे दो। एक जगह पे बताया कि अल्टीमेट ORPS कॉन्सेप्ट, बोलो टाइटल बेस्ट बोलो। टाइटल बताया UORPS कॉन्सेप्ट जरूरी था, तो ये इसके अंदर ORPS इसका बताया अल्टीमेट ORPS ओके, सॉरी। 7 बजे हमको लिंक, 7 बजे ज्वाइन करके अभी मैं क्या कर सकता हूँ शॉर्ट टाइम पे? ठीक है, सॉरी। हमको क्या चाहिए? डक्ट, डक्ट एक हमको क्या चाहिए? पूरा चलेगा। हमको एक पाथ का जरूरी है, ठीक है? वो पाथ को बोलते हैं डक्टिंग। ओके, वो पाथ को बोलते हैं डक्ट नेटवर्क। हमें डक्ट का देना पड़ेगा।
ओके, हमको डक्टिंग किया. So from here the comfort air will come and will enter into the room, right? So if I directly supply the air into the room, air सीधा रूम के अंदर सप्लाई कर दिया तो ठीक है, तब क्या होता है, सिर्फ ये एरिया कूल होगा, रिमाइनिंग एरिया कूल नहीं होता. सो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसीलिए हमें टर्मिनल लगाना पड़ेगा. ठीक है, ऐसा टर्मिनल लगा दिया तो क्या होगा, एयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल. एंड हाउ डक्ट इज मेड सर, डक्ट कैसा बनता है, हाउ डक्ट इज मेड, डक्ट कैसा बनता है सर, हाउ डक्ट इज मेड, डक्ट कैसा बनता है, किस मटेरियल से बनता है डक्ट, सर एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम और जीआई शीट, राइट, एल्यूमिनियम नहीं तो जीआई शीट से बनता है. As it is made of aluminum or GI sheet, those are okay, those are good conductors of heat. तब हमें क्या कंफर्ट एयर इधर सप्लाई कर रहे हैं, सो वो गर्म होने का चांसेस है ना, देयर इज अ चांस, राइट? यस. सो हमें क्या करना पड़ेगा, डक्ट को इंसुलेशन जी. वेरी गुड, डक्ट को इंसुलेशन करना पड़ेगा. Duct insulation need to do. So this is called as insulation. This is called as insulation. Okay, now so calculations, what they are telling, they are telling to supply 600 CFM every minute. Okay, they are telling to supply 600 CFM okay, 600 CFM What is every CFM? minute. So, क्या, What is CFM? cubic feet per minute, Okay, sir. cubic feet per minute, CFM. उतना क्वांटिटी, उतना क्यूबिक फीट्स ऑफ एयर चाहिए वो रूम को कूल करने के लिए. ठीक है, सो कैलकुलेशंस आर टेलिंग, मैं इधर 24 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का एयर सप्लाई कर रहा हूँ, सोचो, एंड दिस इज कॉल्ड एज सप्लाई एयर डक्ट. नाउ मैं क्या किया, फर्स्ट मिनट में 600 CFM सप्लाई किया, फर्स्ट मिनट में 600 CFM सप्लाई किया, एंड इन द नेक्स्ट मिनट अगेन 600 CFM सप्लाई किया, विच इज एज 1200 CFM हो गया. ठीक है, थर्ड मिनट फिर से 600 CFM सप्लाई किया, विच इज 1800 CFM. तो 10 मिनट्स में 6000 CFM, 10 मिनट्स में 6000 CFM, 60 मिनट्स में रूम में एयर हो गया 36,000 क्यूबिक फीट पर मिनट ऑफ एयर. अब बोलो, इफ आई बीइंग कंटिन्यूअसली सप्लाइंग द एयर,
रूम पे कंफर्ट कंडीशन होगा नहीं होगा? यस होगा। रूम पे कंफर्ट कंडीशन होगा। यस। ठीक है, नहीं होगा सर। नहीं होगा। होगा तो कैसा होगा? नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर एचओ को रिटर्न भी जाएगा रूम से सेम टेम्परेचर का एयर। हाँ, still suppose if I been supplying the air continuously, if I am being supplying the air continuously, क्या होता है रूम के अंदर? क्यों नहीं होगा कंफर्ट कंडीशन? सर एरिया बढ़ गया है ना। एरिया बढ़ रहा है, एरिया उतना ही है ना, रूम का एरिया क्या है वही होता है। ओके सर। बोलो क्यों नहीं होगा? सोचना पड़ेगा सर। सर पूरा मैं बोल दिया तो फायदा नहीं होता, आप भी सोचो। सर मैंने बोला सर होगा सर, क्योंकि पर क्यूबिक फीट पर मिनट सर इंक्रीज हो रहा है ना वो सप्लाई। हाँ, तो सर होगा सर। ओके, होगा। यस। ओके, नहीं, पर मिनट का 6000 CFM ज्यादा होता है ना, इसलिए कूलिंग ज्यादा होगा मेरे याद में। कूलिंग ज्यादा होगा। हाँ, कंफर्ट कूलिंग नहीं मिलेगा, हर मिनट में वो ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन एक है, आई एम सप्लाइंग 24 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी मिनट, राइट? हाँ, यस। फिर द रूम पे 24 से कम होगा क्या? मैक्सिमम 24 तक ही होगा, उससे कम तो नहीं होगा ना? यस सर, नियर अबाउट सेम। हाँ, ठीक है, रूम पे कंफर्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सर कैन आई कंट्रोल द मैं एक टेंपरेचर सप्लाई? एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है? हमारे पास एक बैलून है, ओके सर। ठीक है? यू नो बैलून, राइट? यू नो बैलून, राइट? बैलून को क्या बोलता है हिंदी में? गुब्बारा। Okay, someone, Wasim, I think you are having some background voice. नो सर। Okay, बैलून को हमें उसके अंदर एयर ब्लो कर रहा हूं कंटिन्यूअसली। ओके। कुछ टाइम के बाद क्या होगा? ब्लास्ट। ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों ब्लास्ट हो रहे हो? उसका थिनिंग कम हो जा रहा है और उसमें नहीं, उसमें प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है ना, ज्यादा बढ़ जा रहा है ना। उसके अंदर प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है? सेम ईयर रूम के अंदर, रंजित सर प्लीज बी ऑन म्यूट व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग। ओके, इधर भी प्रेशर बढ़ रहा है, मैं इंक्रीज ब्लो कर रहा हूँ, एयर थ्रो कर रहा हूँ, तब इसके अंदर एयर को इधर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सो एज प्रेशर इंक्रीजेस, ये बिल्डिंग ब्लास्ट नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज मेड ऑफ कंक्रीट एंड सम अदर मटेरियल्स। किधर प्रेशर बढ़ता है? ये सप्लाई टर्मिनल के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस ऑन द सप्लाई टर्मिनल, when the pressure increases on the supply terminal, then प्रेशर सप्लाई टर्मिनल के ऊपर इंक्रीज हो रहा है, तब क्या होता है कि सप्लाई का एयर, फ्रेश एयर आने के लिए मुश्किल हो जाएगा।
So when fresh air is not entering in, okay, तब कूलिंग तो नहीं होगा, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और ब्लोअर के ऊपर लोड बढ़ेगा. So when blower के ऊपर लोड बढ़ेगा, that increases the power consumption more. So as per the calculations, what calculations are telling, 600 CFM हमें मेंटेन करना पड़ेगा. हमें क्या करना है? 600 CFM मेंटेन करना पड़ेगा. So to maintain 600 CFM, when you supply 600 CFM, you need to remove 600 CFM. हमें 600 CFM को सप्लाई कर रही तो 600 CFM को रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है, we need to remove 600 CFM. So what is the basic principle of a design engineer, sir? Hope everyone is a mechanical engineer, right? Yes. All of you are mechanical engineers, right? Yes. हाँ. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए डिजाइन का बेसिक प्रिंसिपल क्या होना है? कोऑर्डिनेट सर. क्या होना है? व्हाट कोऑर्डिनेट सर. कोऑर्डिनेट वो डिजाइनिंग पे नहीं आता है, वो एग्जीक्यूशन पे आता है. तो कोऑर्डिनेट सर डिजाइन इंजीनियर का बेसिक प्रिंसिपल क्या होना है? कभी भी आप कुछ डिजाइन करना है, तब आपका दिमाग में फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होना है? आई थिंक सर, हमें क्यों डिजाइन करना है? कुछ भी प्रोजेक्ट को हमें क्यों डिजाइनिंग करना है सर? सर आई थिंक बेसिक सर प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन सर, कंट्रास्ट एंड बैलेंस, proportion, pattern, space and movement. I think space, variety and unit. नो, बेसिक प्रिंसिपल क्या होना है? आप कुछ भी प्रोजेक्ट क्यों डिजाइन करना है? हमें डिजाइनिंग क्यों करता है? क्योंकि सर हमको सर उसको ओवरव्यू मिलता है. ओवरव्यू मिलता है, ठीक है. वो डिजाइनिंग करने के टाइम पे दिमाग में क्या होना है? सर पहले से हमें एनालिसिस करते हैं, मतलब कैसे अपना वर्क को डन करना है, कैसे कहाँ पे क्या चीज़ें, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, उसको पूरा सिस्टमेटिक पहले से एनालिसिस हम करते हैं, इसलिए हम डिजाइन करते हैं. अगर विदाउट डिजाइन के मैं आपके पास डिजाइन करने को, वसीम, ठीक है, आप डिजाइन इंजीनियर है, मैं आपके पास डिजाइनिंग के लिए आया है. ओके सर. ओके, व्हाट विल बी योर फर्स्ट क्वेश्चन? यस सर, आई थिंक आई मस्ट विच टाइप वांट टू डिजाइन लाइक. पूछेगा ना आपका रूम साइज कितना है, वो पूछ के फिर कितना CFM चाहिए हम लोग डिजाइन करना पड़ेगा. आपका रूम, उससे पहले कुछ और पूछता है. आपका जगह का टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? वो क्लाइंट को कैसा पता होगा? क्लाइंट मेजर करके तो नहीं आएगा. क्लाइंट वो भी सेकेंडरी क्वेश्चन हो सकता है. हाँ, फर्स्ट रूम का साइज है, नेक्स्ट रूम का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है. ठीक है, मैं जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ. बोलो आप सर. एक इवेंट करना है, ठीक है. ओके. आप एक इवेंट मैनेजर के पास गया है. हाँ. उनका पहला क्वेश्चन क्या होता है इवेंट मैनेजर का? कौन सा इवेंट है? इवेंट बता दिया, पूरा बता दिया. पूरा Okay. ये इवेंट है, ये कॉलेज में ये करना है, ठीक है. Okay. इसके लिए ये ऐसा करना है, ऐसा पूरा बोल दिया. आप पूरा Okay. उसको बता दिया. उनका पहला क्वेश्चन क्या होता है उसके बाद? कितना बजट है? कितना बजट है? सर ठीक है. बजट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट
फर्स्ट हमको बजट, क्योंकि विदाउट बजट वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। ओके क्योंकि मैं आपके पास प्रोजेक्ट लेके आया, मैं क्लाइंट हूँ, आप कंसल्टेंट है, ओके ठीक है। अब प्रोजेक्ट डिजाइन किया 1 करोड़ का, अच्छा एडवांस सिस्टम्स बना के, और मेरे पास 10 लाख ही पैसा है, ओके ओके। फिर क्या होगा? फिर वो मटेरियल का वो डिजाइन अलग करना पड़ेगा, अलग टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। हाँ टाइम वेस्ट हो जाएगा लाजिम। So who is going to face the loss here? समझ गया, मैं समझ गया। फर्स्ट ओनर का पास पूछना पड़ेगा कितना बजट का है। First, budget. Everywhere हाँ budget comes in the mind. So coming ओके। to the budget, design क्यों करता है हमें, क्यों, why we design the system is वो to make मटेरियल the लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग डिजाइन करते हैं। क्या? मटेरियल लॉस। Yes, to make the project cost effective, economic हाँ होना है प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक रहा, ओके। ओके। और इंडिया में वो ज्यादा होना है, हाँ समझ गया। ठीक है। So project should be cost effective. Okay. Basically, coming to the any type of loss, you can be on mute, sir. Coming to the any type of loss, any type of project, there are two types of losses. Okay. उधर दो type of losses होता है। First type of loss is, okay, first type of loss is one time loss, and second type of loss is lifetime loss. एक one time loss है, एक lifetime loss है। वन टाइम लॉस क्या है, लाइफ टाइम लॉस क्या है? सो वन टाइम लॉस, ओके, वन टाइम लॉस मीन्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ओके, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। and the lifetime loss, okay, lifetime loss is, okay, lifetime loss is whatever the running cost you are giving, okay, whatever the running cost, the running cost of the project is taken as a lifetime loss, okay, the running cost of the project is considered as a lifetime loss। कुछ भी प्रोजेक्ट हमें करता है उसमें वन टाइम लॉस ज्यादा होता है, लाइफ टाइम लॉस ज्यादा होता है। will one time loss will be more or lifetime loss will be Lifetime more? loss more. Lifetime loss will be more, right? Lifetime More. loss will be more। सेम ईयर वो लाइफ टाइम लॉस रिड्यूस करने के लिए, ये हमारा प्रोजेक्ट में वो लाइफ टाइम लॉस रिड्यूस करने के लिए हमें क्या कर रहा है, वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस रिटर्न एयर। सपोज मैं 24 डिग्री सेंटीग्रेड का एयर सप्लाई कर रहा हूं, मैं 24 डिग्री सेंटीग्रेड का एयर सप्लाई कर रहा हूं, वो रूम पे कितना टाइम होता है, 1 मिनट होता है, okay, it will be in the room for 1 minute, again it is going back, again it is going back from the room, as it is going back from the room, okay, as it is going back from the room, उसका टेम्परेचर मोस्टली हो सकता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ मुझे बोलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड को 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेने के लिए ज्यादा कॉस्ट होगा, नहीं तो 30 को 24 तक लेके जाने के लिए ज्यादा कॉस्ट होगा। फोर्टी को 24 तक लेके आने के लिए कॉस्टिंग ज्यादा होगा, नहीं तो 30 को 24 तक लेके आने के लिए कॉस्टिंग ज्यादा होगा। नहीं 40 को 24 करने के लिए ज्यादा होगा। 40 को 24, डेल्टा टी ज्यादा है उधर, ठीक है। तो इसीलिए इफ आई रीयूज दिस एयर, ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब रनिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट डिक्रीज कर सकता है ना हमें? कर सकते हैं। यस, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम रीयूजिंग दिस एयर।
हमें ये एयर को भी हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड एज रिटर्न एयर डक्ट. Again, we need to protect this also. Even 1 degree centigrade change also may increase the running cost of the project. So that is the reason we need to insulate this duct. ओके, सो इंसुलेट कर दिया. सो इसमें ये साइकिल में इफ आई डू दिस साइकिल, ओके, इफ आई डू दिस साइकिल कंटिन्यूअसली, इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर. कैन यू आइडेंटिफाई? इफ आई टेक द एयर and cool the air, okay, and this air I am taking back and coming to here, again cooling down and going here, again it is going back. So same air cycle हो रहा है. So इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक है सर. ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. हाँ, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सिर्फ वो कार्बन डाइऑक्साइड रूप का अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाएगा. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाएगा. तो मैं क्या करता हूं, एक 10 CFM को रिमूव करता हूं, 590 CFM को लेता हूं और इधर से एक 10 CFM को ऐड करता हूं फ्रेश एयर. ठीक है, अब सुनना है, केयरफुली सुनना है. दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट. फर्स्ट मिनट में मैं 10 CFM का फ्रेश एयर ऐड किया. ठीक है, फर्स्ट साइकिल पे. नेक्स्ट सर, वॉइस इज क्रिएटेड नॉइज. सर प्लीज बी ऑन म्यूट सर. सेकंड मिनट में 20 CFM हो जाएगा वो. 10 + 10 20. 10 मिनट्स में सो फ्रेश एयर कितना ऐड किया? 100 CFM ऐड किया. 60 मिनट्स में 600 CFM. दैट मीन्स आफ्टर 60 minutes completely air is replaced with 600. Completely 600 CFM is replaced with 600 CFM, right? Okay, so कितना बार रिप्लेस हुआ? 600 CFM is being replaced with 600 CFM one time. एक ही बार रिप्लेस हुआ है. ठीक है, so which is called as one air change per hour. One air change per hour. So एक घंटा में एक बार 600 CFM हमें 600 CFM से रिप्लेस किया है. ओके, इधर ये एयर चेंजेस कितना होना है? दैट हैज बीन डिफाइंड बाय ASHRAE फॉर रेसिडेंशियल एप्लीकेशन. For residential application, it is one air change per hour. For commercials like bars, pubs, it is gone with 3 air changes per hour. For restaurants, for malls, airports, it is gone with 2 air changes per hour. For industries, it is with
6 to 10 air changes per hour. 6 to 10 air changes per hour. Okay, this is how we consider the air changes. Suppose हमको 2 air changes per hour चाहिए, हमको 2 एयर चेंजेस पर आवर चाहिए, ठीक है, 20 CFM लगेगा। CFM लेना पड़ेगा, ऐसा हमें कैलकुलेट करके लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउ हरी वाटर,
Okay, so this is called a refrigeration system. So refrigeration cycle में क्या क्या components होता है सर? Primary components. What are the primary components we have? Compressor, yes, expansion, condenser, expansion valve, yes, and evaporator, right? Compressor, condenser, expansion valve, and evaporator. So after being compressed, refrigerant will become very hot refrigerant, right? Very hot refrigerant. As refrigerant is very hot refrigerant, this is water cooled evaporator. Sorry, water cooled condenser. ये क्या है? वाटर कूल्ड कंडेंसर है. सो हियर वी सप्लाई कोल्ड वाटर. हमें क्या सप्लाई कर रहे हैं? कोल्ड वाटर सप्लाई कर रहे हैं. कोल्ड वाटर सप्लाई कर रहे हैं. सो हियर शेल के अंदर पानी होता है, ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट होता है. सो रेफ्रिजरेंट विल बिकम वेरी हॉट टेम्परेचर टू hot refrigerant. Cold water will become hot water. Hot water. So this hot water pumped back to the cooling tower. ये क्या है? Cooling tower बोलते हैं. Cooling tower. In the cooling tower, we spray the water in the form of tiny water droplets. ऐसा स्प्रे करता है मैं पानी को. ठीक है, ऐसा स्प्रे करते करते हमें इधर एक्सियल फैन को यूज करता है and we'll remove the heat in the water and we'll make it cold, and this water is supplied back by using the pumps. These two are pumps. So these two are condenser pumps we say. And this is called as condenser piping. सपोज कभी कभी ऐसा कूलिंग करने के टाइम पे कभी कभी व्हाइल वी आर कूलिंग कुछ वाटर एवापोरेट होने का चांसेस है. ओके, कुछ वाटर, सम वाटर मे गेट एवापोरेटेड. सो टू बैलेंस द वाटर, what we need to do? Okay, we have connected with makeup water tank. Makeup water tank, it is connected with makeup water tank. So इधर एक floating valve होता है. कभी इसके अंदर पानी कम हो जाएगा. Whenever water gets down, the floating valve will release the water. Okay, the floating valve will release the water. Okay, now coming back to here. So this hot refrigerant will come to the expansion valve. Near the expansion valve,
it expands and will become chilled refrigerant. Chilled refrigerant क्या होता है? Chilled refrigerant. Now by using the pumps, a line के अंदर already water is charged. That pipes are filled with water. Okay, so we'll supply cold water. Cold water हमें supply करता है. So whenever we supply cold water, this chilled refrigerant and cold water heat exchange होता है. This will become chilled water. Chilled water होता है. This chilled water is supplied to the cooling coil, and then heat exchange takes place with the air and chilled water. Again chilled water will become cold water, and cold water will supplied back to here. The chilled refrigerant will become cold refrigerant, and this refrigerant will pumped back to the compressor, and compressor will compress again the same cycle. So this part, the part which we are talking here, the part which we are talking here, this part is called as chiller. This part is called as chiller. Okay, now so here this piping are defining, suppose return temperature may be 20 degrees centigrade and supply temperature may be 5 degrees centigrade, which are extremely cool. These two are extremely cool to the ambient temperature 40 degrees centigrade, right? So we need to insulate. Okay, we need to insulate the pipes. में पाइप्स को इंसुलेट करना पड़ेगा. Of insulation, and this is called chilled water piping. Okay. And these are called chilled water pumps. Chilled water pumps. So this is how the whole all air system works. All air system ऐसा काम करता. ठीक है? Now just I'll show you one video. What happens, sir? Wait. Chiller system. See this video, you can understand the whole concept. Centralized air conditioning system used a large cooling capacity, usually for commercial purposes. Chiller system consists of three main cycles, which are refrigerant cycle, chilled water cycle, and condenser water cycle. The components that are involved in refrigerant cycle are compressor, condenser, filter dryer, expansion valve and evaporator. For chilled water cycle, the components which involved are air handling unit and water pump. In condenser water cycle, the components that are needed for the process are cooling tower and water pump. Refrigerant cycle. Refrigerant cycle consists of four basic components, which are compressor, condenser, expansion device and evaporator. An additional component called filter dryer also included in the system. Compressor. Compressor works to increase the pressure of the refrigerant,
In addition, it also serves to increase the temperature of the refrigerant higher than the temperature of condenser water so that the heat transfer can occur in the condenser. The refrigerant enters the compressor with low pressure gas and out with a high pressure gas condition. Type of compressor used was scroll hermetic type. Scroll compressor works based on gas at low pressure and temperature enter the suction line and go into the compressor. The low pressure and temperature gas is pressurized by the scroll compressor to high pressure and temperature gas. The high pressure and temperature gas is then passed through the discharge line and then go into the condenser. Condenser. The refrigerant in high pressure gas will be enter the condenser at a temperature higher than the temperature of condenser water. In condenser, the heat will be eliminated to the condenser water from the cooling tower through the process of convection and conduction. After the heat is removed, the refrigerant in high pressure gas is condensed into a high pressure liquid when out of the condenser. Condenser most commonly used is shell and tube type. Water is flowing through the tube while refrigerant liquid flooded in the shell. Filter dryer. Before the refrigerant flow to the next main component, it will be passes through an additional component called dryer. Dryer acts as a dirt filter and absorb if there is moisture in the refrigerant. This ensures that refrigerant is clean and dry before entering the expansion valve. Expansion valve. Expansion valve serves to reduce the pressure and control the flow of refrigerant going into the evaporator. When the pressure of refrigerant has declined drastically, the temperature will drop dramatically, which is lower than chilled water temperature. In a centralized system, expansion device DXV thermal expansion valve type is used. It works according to the temperature of the refrigerant which comes out from the evaporator. Sensing bulb placed on outflow of the evaporator works to detect temperature of the refrigerant and sends a signal to TXV. Needle valve in the TXV will control the flow of refrigerant based on the transmitted signal. Evaporator. The refrigerant in low pressure liquid form coming out from the expansion valve will flow into the evaporator at low temperature. In evaporator, the heat from the chilled water which comes out from the air handling unit will be absorbed by the refrigerant due to the temperature difference produced. When the liquid refrigerant with low temperature and pressure absorb heat from the chilled water, the refrigerant will evaporate to low pressure gas. The evaporator most commonly is used shell and tube type, where the refrigerant flow in the tube and the water flooded the shell. The evaporator is insulated with an insulation to reduce heat transfer. The refrigerant in low pressure gas will return to the compressor and continue to the next cycle. Chilled water cycle. Chilled water cycle consists of two basic components which are air handling unit and water pump. Air handling unit. Air handling unit is a place where cold air is produced before it can be distributed. It consists of several key components such as cooling coil, fan motor, belting, filters and the casing. Chilled water produced in the evaporator will be flow into the air handling unit through a pipeline which is marked with dark blue color. This chilled water is known as chilled water supply. In air handling units, chilled water will then pass through the cooling coil. In the cooling coil, the hot air will go through the cooling coil and switch to cold air due to the heat transferred to chilled water. Cooling coil are commonly used in this system are tube and fin. After absorbing heat from the hot air, the chilled water will be known as chilled water return. Normally chilled water return pipe will be colored with light blue. Chilled water return will return back to the chiller to transfer the heat absorbed to the refrigerant in the evaporator. Water pump.
This cycle will continue as long as the pump is functioning well. The pump used in the system is centrifugal type. The centrifugal pump works based on centrifugal force produced by the rotating impeller in the pump casing. For airflow system, it is operated using an auxiliary fan which to create the air cycle from the room and mix it with fresh air from the outside to the air handling unit and return back to the room. Type of fan used was centrifugal fan and powered by a motor and connected through a belting. The air flowing through a channel is called ducting. There are two types of air duct which are supply air duct and return air duct. These air ducts are coated with insulating material consisting of fiberglass wrapping with aluminium foil. It reduces heat transfer from the environment to the air duct. Air return to the air handling unit will pass through the filter before passing through a cooling coil and return back to the room. This to ensure that the air return into the room in a clean condition. Condenser water cycle. Condenser water cycle consists of two basic components which are cooling tower and water pump. Cooling tower. Cooling tower serves to cool down the temperature of condenser water that will be used to absorb heat in the refrigerant at the condenser. It consists of several components which are motor, sprinkler blade, water fin, water reservoir, buoys, and make up water tank. From the condenser in chiller, condenser water flow to the cooling tower with the help of a centrifugal pumps. This chilled water is called condenser water return. This condenser water will pass through the rotating sprinkler blades on cooling towers. This rotating rotor blades using pressure generated by the condenser water itself. Water will gush down through the fins to reduce the speed of water going down. This can delay the time and the heat can be absorbed more effectively by the surrounding air that passing through the fins. Air through the fins is forced by a rotating fan on the sprinkler blade rotated by the motor. This fan rotates with its gusts upward. This will cause the air to move from the bottom to the top of the cooling tower where it is opposite to the flow of the condenser water. Condenser water which have eliminated their heat by the surrounding air will accumulate in the basin under the cooling tower. Condenser water that flowing out from cooling tower to the chiller is called condenser water supply. This condenser water will flow back to the chiller to continue heat absorbing work from the refrigerant. The buoy system at the water basin is connected to the make-up water tank. It works for adding water when the water level in the basin decreases at certain level due to evaporation. This condenser water cycle will continuously flow as long as the centrifugal pump is in good working condition. This explanation hopefully will enhance the student comprehension regarding the system. The centralized air conditioning is the commonly used system and it's very important to the student to well know the system. Did you get the concept? Yes, sir, it's good. So did you get the concept? Yes, how but I it have works? some question. Yeah, ask me. Please open the diagram. Sir, Ranjit sir, please be on mute. Yeah. Yes, sir. Tell me. One Yes, minute, tell sir. me. Sir, can you explain about this POP insulation and chiller water pump and chiller water pumps?
chilled water pump supplies the water from condenser to AHU. उसका काम वो ये किया है, पानी को सप्लाई करना Okay, है. sir. And then return chilled water is. एक सप्लाई करता है, एक उधर से वापस बट लेके सर आता है. बहुत शायद एक साइड से चिलर वाटर ही जा रहा है, फिर उधर से भी चिलर वाटर ही आ रहा है, ऐसा क्या? कहाँ? यस इधर सर, से चिल्ड वाटर जा रहा है ना, इधर यस से कोल्ड वाटर आ रहा है. ये CW कोल्ड वाटर, ये चिल्ड वाटर CHW. So draw the drawing, everyone. Draw the drawing. So this is one of the important question in the point of interviews. Whenever you come to the point of interview, this is one of the important question. When I have given my interview in the 2014 to LNT, मैं LNT में इंटरव्यू दिया था 2014 पे, तब मुझे एक ही क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन ऑल एयर सिस्टम. Why? Because if you are clear with the all air system, then you know maximum how air conditioners are going to work. Every system is a complete industrial air conditioning system included in this all air system. sir, I have some doubt, sir. Sir, chill water and cold water, Yeah. sir, both are same. कैसा होता है? बोथ आर सेम. चिल्ड वाटर का टेम्परेचर कितना लिखा है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड है. रिटर्न टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है ना. Okay, sir. So, sir, if we can say same temperature, then कैसे सेट करेगा? इधर से जाके इधर से जाता है, ओके, इधर हॉट एयर आता है, इधर कूलिंग Yes. एंड डिह्यूमिडिफिकेशन तो हो रहा है ना, तब ऑटोमेटिकली पानी का टेम्परेचर बढ़ता है. Okay, got it. नोट करो, आराम से नीटली नोट करो. And sir, what is written here? Yes, sir, what is written here? Written air, the air which is you are taking from the room Okay, is sir. called written air. सर ये इवापोरेटर कोयल में पानी कहाँ से ऐड ऑन होगा इसमें? सर या उसके लिए भी एवापोरेटर टाइम, कॉइल, एवापोरेटर इधर इधर पानी अबे ये पाइप के अंदर ऑलरेडी चार्ज करके रखता है. उसका कुछ प्रेशर गेज वगैरह लगाते हैं? और वो पूरा आपका पाइपिंग का क्लास पे आता है. वो प्रेशर गेज, BTU मीटर, वो क्या क्या लगाना है मैं पाइपिंग क्लास में बताएंगे. ओके सर.
हेलो, रुको मैं फोन करता हूँ। Yes. Is this side done?